Very good evening to everyone right in there. Welcome to the worry session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this session wherein we are going to deal with the chapter Weathering the Storm in Ersama, and it's gonna be a word-to-word explanation. I would be really glad if you guys are going to listen to me very carefully because this is like very important class. I'll be telling you all the important aspects of the chapters, and we'll be concentrating upon the words, we'll be concentrating upon the important information. And since the information is a little factual one, wherein the facts are being given and it talks about like being so very much firm in front of any obligation, sorry, in front of any kind of like tough situations, or you see that any kind of like situation, sorry, any kind of struggles that are coming in front of you, so you have to be smart enough to deal with that. Okay, so that is what we are gonna do today. Please make sure that you all are going to listen to me very carefully and kindly share the link of the session with all your friends as well. Also give me a confirmation in the comment section that I am correctly visible and audible to everyone right in there, because this is something very important. Okay, so everybody, please make sure that you all are listening to me very carefully, and I hope that you guys can see me well. Okay, so moving ahead, everybody, weathering the storm in Assam, it is more about what, like here we are going to talk about the fact that there was a storm which was like really a terrible storm, okay, due to which a lot of destruction had taken place, devastation had taken place, and it resulted in the killing of a lot of people, and a lot of like property was also being destroyed. So that is what we see right in here. Please make sure that you all are listening to me very carefully. Hey Umaza, I'm very well, thank you so much. Hey Adarsh. Hi everybody. Hi, feel the music. A very good afternoon, sorry, a very good evening, everybody. I hope you all are doing great. Hey Vivek. Hi dear. A very good evening. Okay, people. So making a move ahead. My name is Preksha Sharma. I'm sure you guys know about me. I have been teaching you all for quite some time. I've been guiding you all that how to make a move in your English language, specifically like how to really understand the academic English and how to really understand the English which is like used in our practical lives. Okay, so you better understand everything in a good manner. Okay, because see guys, English is something which is our lifelong companion. It's gonna stay with us for a lifelong duration. So you better pay attention to every aspect of it. You better pay attention to like every detail of it as well. It's like really important. Making a move ahead, weathering the storm in a summer word-to-word explanation. Is there anyone in the class who does know about what is being given exactly in the chapter? Who is the protagonist? Who is telling what? If yes, then please tell me in the comment section, and if no, then stay tuned for the entire session. Okay, everybody, quickly tell me, guys. What's being given, everybody? Okay, quickly, everyone, quickly, everybody. Hey Nandani, good evening. So what is being given, everybody? What is being given in this very particular chapter? What do you see? What does the chapter tell us? What does it inform us? So tell me in the comment section, everyone. Jaldi batao. Adarsh beta, be kicked out of the class. Not needed in the class. Okay? Go and enjoy. Have a cup of coffee somewhere out. Alright, where you can at least get some sort of attention. Anyway, people, come on, tell me. What is being given in the chapter? Just tell me, just try to make use of the language, try to frame the sentences for your own good, so that at least you get an understanding that हाँ इसमें ये दे रखा है, हाँ इसमें ये दे रखा है. So you need to have that understanding. Okay, so quickly tell me, everybody, what's being given in the chapter so that we can understand everything in a good manner. Anybody? किसी को पता है? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से. You haven't read the chapter yet? Okay, all right, ठीक है. So चलिए फिर, कोई और तो आंसर दे ही नहीं रहे, तो मैं चलती हूँ आगे, आप लोगों को बताती हूँ कि चैप्टर में एग्जैक्टली दे क्या रखा है. ठीक है, चैप्टर में थोड़े से फैक्ट्स हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, जब भी हम एक फैक्चुअल चैप्टर से डील कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है कि आप हमेशा उन फैक्ट्स को एज इट इज़ लर्न करो. यू कैन नॉट डिस्टॉर्ट those facts. That's an absolute wrong thing. Okay, that is absolutely wrong. फ्लड की वजह से सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. ठीक है विवेक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, बट प्लीज ऑलवेज ट्राई टू गिव एन आंसर इन इंग्लिश. ओके, सिंस द सब्जेक्ट इज इंग्लिश, एंड आई वांट ऑल ऑफ you to be like getting so accustomed with the use of the language. The more you're gonna use it, it'll be like so helpful for you, for your own self.
Okay, this is Weathering the Storm in Ersama, quite an important chapter which is being there in your syllabus and you need to pay proper attention to it. Alrighty. So now let's get going, everybody. Let's see what's being given in the chapter. We are gonna learn whatever the facts are, okay? So let's get going, people. Yeah, just a moment. Yeah. So what do we see? The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. यानी जो साइक्लोन आया था, जो तूफान आया था, जो उड़ीसा में आया था, कब आया था? 1999 में, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे और बर्बाद हो गए थे और उनका सारा घर बार और बहुत सारे जो क्या कहते हैं गांव खेत थे वो सब बर्बाद हो गए थे, सब खत्म हो गए थे। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स, ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? टेरिबल। इट्स इंपॉर्टेंट बेटा, सारे वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए। वर्ड्स के सिनोनिम्स हमेशा ध्यान में रखा करो जिससे कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से कर सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द चाइल्ड हेल्प्स ऑर्फन्स एंड विडोज। वेरी गुड डेविल, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दो ड्रेडफुल नाइट्स के लिए, दो टेरिबल नाइट्स के लिए प्रशांत, द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज प्रशांत, ही इज अ वेरी यंग मैन, ही वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। मरून का मतलब दैट ही वॉज स्टेइंग अ फिक्स्ड without going anywhere for two terrible nights right on the roof of a house. On the third day, तीसरे दिन उसने डिसाइड करा that he will go to his village. Did he find his family? तो तीसरे दिन उसने ये डिसाइड किया होता है कि वो ना अपने गांव जाएगा। तो हमको इस चैप्टर में क्या ढूंढना है? वी विल हैव टू फाइंड कि क्या उसे उसकी फैमिली मिलती है। Okay, so I am going to tell you all everything in super detail. Please stay tuned, ask your friends to join in, all right, and make sure that you guys are definitely making a move with him. ठीक है, so हुआ क्या? 27th October 1999, this is the date, you have to remember it. 27 October 1999 को 7 years after his mother's death, यानी कि उसकी मम्मा की डेथ के 7 साल बाद, प्रशांत had gone to the block headquarters of Ersama. कहाँ गया था? ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया था। कहाँ का? एरसामा का, जो एक छोटा सा टाउन है। कहाँ पे? कोस्टल उड़ीसा में। ओके, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, 18 किलोमीटर दूर है उसके गांव से। ऑलराइट, क्यों गया था? टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, मतलब एक दिन बिताने के लिए अपने दोस्त के साथ। इन द इवनिंग, यहाँ पे इन क्यों लगाया है हमने? क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन, वो क्या है? शाम को। इन द इवनिंग, शाम में। और डार्क एंड मिनेसिंग, मिनेसिंग इज लाइक विच सीम्स टू बी लाइक वेरी सैड। ओके, एक डार्क और मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, मतलब इमीडिएटली एक अचानक से एक डार्क और क्या कहते हैं, एक बहुत ही ज्यादा बैड सा स्टॉर्म इकट्ठा हो गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, मतलब जो हवाएं थी, ठीक है, वो क्या थी? बहुत तेज तेज चलने लग गई। ठीक है, विद स्पीड एंड फ्यूरी। फ्यूरी क्या होता है? एंगर। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दो। फ्यूरी रेफर्स टू योर एंगर। ठीक है, तो ये सारे मतलब जो हवाएं चल रही थी वो इतनी तेज स्पीड से चल रही थी कि क्या बताओ। ऑल राइट, और क्या था उनमें? एक एंगर भी था फायर में, सॉरी नॉट इन द फायर, बट एक एंगर, एक गुस्सा था उस हवा में, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। विटनेस इज लाइक कि उसको सहन करना, उसने ऐसा तूफान, ऐसी हवाएं कभी पहले नहीं देखी थी। हैवी एंड इनसेसेंट, इनसेसेंट मतलब होता है कंटिन्यूस। ऑल राइट, एकदम कंटिन्यूटी में। हैवी मतलब बहुत तेज, और कंटिन्यूटी में बारिश ने क्या किया? पूरे इसको, आसमान को किससे भर दिया? डार्कनेस से भर दिया। एशियंट ट्रीज, यानी कि जो पहले से ही जितने भी वहां पे ट्रीज थे, पेड़ थे, क्या हुआ उनका? दे वर अपरूटेड, मतलब वो उखड़ गए थे जमीन से, एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और उखड़ कर धरती पर गिर गए थे। ठीक है, स्क्रीम्स रेंट द एयर। व्हाट डज दिस मीन? स्क्रीम्स मतलब लोग चिल्लाने लग गए तेज तेज से, और अब उससे क्या हुआ कि वो हवा में वो चिल्लाहट बैठ गई। ठीक है, एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जैसे ही जो लोग थे और वहां पे जो घर थे वो धीरे धीरे वॉश अवे हो रहे थे, यानी पानी के साथ वो सब अब आगे बहकर जा रहा था। The angry waters, it's like very important. The waters has been called angry. Why? Because it was in a speed.
ठीक है, बहुत तेजी से सब कुछ बहा रहा था. So when you are angry, you speak loudly, you scream loudly. That is what was happening with the water. It was just moving very, like in a very greater speed, and that was the problem. Okay, and that was the problem, which was which was clearly showing that it was totally in a devastation mood, swirled into his friend's house. Swirling is like this, आपने देखा होगा, right? वो पूरा इस तरीके से होता है कि पानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला जो होता है ना आपका, ये वाला जो पूरी ऐसे ऐसा वाला जो सिचुएशन बनता है, इसमें आपका पानी इस मोशन में आते आते उसके फ्रेंड के घर पे आ गया नेक डीप. यानी कि सब लोग इतना इतना डूब गए कि उनका बस चेहरा बाहर रह गया. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक. जो उसके फ्रेंड के घर की बिल्डिंग थी वो ईंट से बनी हुई थी. एंड मोटर, मोटर रेफर्स टू द सीमेंट मटेरियल, द मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग अ होम. ठीक है, सो वो ना ईंट और सीमेंट से बनी हुई थी. एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. यानी कि विंड की स्पीड क्या थी, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड, मतलब इतनी तूफानी हवा चल रही थी. ठीक है, लेकिन जो घर था वो सीमेंट से और ईंट से अच्छे प्रोडक्ट से बना हुआ था, तो वो सहन कर पा रहा था. ठीक है, इतना इतना ज्यादा बारिश का होना, इतना ज्यादा हवाओं का चलना. ठीक है, बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली. कोल्ड टेरर क्या है कि जो अभी उनके दिल में डर डर बैठा हुआ था ना, कि बाहर की सिचुएशन तो बहुत खराब हो गई है लेकिन हम लोग तो बचे हुए हैं. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? Sajid, I had taken the class at 2 p.m. today. Please check it out. All right. So वो क्या था कि उनका जो कोल्ड, जो उनके दिल में कोल्ड टेरर, why? Because so far they were just seeing it outside their home, okay? But now it was within their home as well, and now it was growing with the terror. Why? Because the crashing of tree that had got uprooted. All right. So जो क्या था, जो क्या कहते हैं उखड़ गया था पेड़, वो जाके कहाँ गिरा, इट हैड फॉलन ऑन देयर हाउस, उनके ऊपर छत पे गिरा. जिससे कि कब कब गिरा, इन द मिडल ऑफ द नाइट, जिससे कि उनकी रूफ्स और वॉल्स डैमेज हो गई. Okay, do you all understand this, everyone? Could you give me a thumbs up in the comment section? All the details matter. What was the speed of the wind? When did the trees fall on the roof of the friend's house? And how was the state of the water? It was the angry stain. And how much water was there in his house till neck deep? So you have to concentrate on every detail. Okay, I hope that's clear. May I have yes or no in the comment section, please, if you guys don't mind. Yes, guys. Okay. Moving ahead, the crazed destruction. Crazed का मतलब होता है ये जो wild devastation हुआ. ठीक है, wild devastation हुआ या wild destruction हुआ, wrought by the cyclone. Wrought क्या होता है? Wrought is like produced. ठीक है, ये जो था, ये जो प्रोड्यूस हुआ साइक्लोन की वजह से. एंड द सर्ज, ऑल राइट, सर्ज मतलब ये जो पानी का बढ़ना था, जो पानी बढ़ रहा था. एंड द सर्ज ऑफ द ओशन. सर्ज ऑफ द ओशन का क्या मतलब है कि जो ये पानी बढ़ रहा था, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 66 आवर्स. और ये जो पानी था, जो एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, जो पानी का ये जो सर्ज था जो बढ़ रहा था, वो कंटिन्यू रहा. ठीक है, कब तक कंटिन्यू रहा? अगले 36 घंटों तक. You need to remember this. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. लेकिन वो कह रहा है कि जो विंड की, जो हवाओं की गति थी, वो थोड़ी क्या कहते हैं कम हो गई थी अगली सुबह तक. To escape the waters rising in the house, इस चीज को रोकने के लिए कि पानी जो है वो ज्यादा बढ़ जाए घर में, प्रशांत जो था नरेटर हमारा, एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, और जो उसके फ्रेंड की फैमिली थी, दे हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. मतलब वो सेफली कहाँ जाके बैठ गए? वो अपने उस घर की छत पर जाके बैठ गए. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. Why the cyclone is called the super cyclone? Because the amount of destruction it had caused, that was immense, that was huge.
Okay, that is why we see that the cyclone has been given the adjective super. Also, what do we come to know from here is when Prashant had taken a look around him, he was extremely shocked. Okay, and he just couldn't forget it. All right, and he just couldn't forget the amount of devastation that was being produced by that super cyclone. In the grey light of the early morning, ठीक है, तो वो लोग कब जाके बैठे थे ऊपर, जब थोड़ी सी सुबह होने लगी थी. ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग का क्या मतलब है? व्हेन द सन इज अबाउट टू राइज. ऑल राइट, आई मीन व्हेन द मॉर्निंग इज अबाउट टू टेक प्लेस. तो इट इज बेसिकली द टाइम ऑफ डस्क, और जिसे हम संध्या बोलते हैं. ओके, सो अ रेजिंग डेडली. ओके, रेजिंग मतलब एंग्री, ठीक है. डेडली मीन्स घातक, एकदम भयानक. ऑलराइट, ब्राउन शीट ऑफ वाटर. ब्राउन शीट मतलब ब्राउन कलर का पानी, शीट बेसिकली ऑफ वाटर. सब कुछ उसने कवर कर रखा था जहां तक आंख देख सकती थी. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस. फ्रैक्चर्ड मतलब आधे टूटे हुए, ठीक है. सो सिर्फ फ्रैक्चर्ड सीमेंट के हाउसेस कुछ कुछ जगह पे अभी भी खड़े थे. All right, bloated animal carcasses. Carcasses refer to the dead bodies of what? Animals. All right, and corpses refer to the dead bodies of humans. So there is a difference between both the words. Please do not interchange them. We can never use the term carcasses for the humans, and similarly we cannot use the term corpses for the animals. We always go ahead with the term carcasses for animals and corpses for humans. Okay, I hope that's clear to everyone. Alright, so a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. सिर्फ जो fractured human के houses थे ना, वो कुछ कुछ जगह पे थे. Bloated मतलब एकदम bloat करना is like inflated, ठीक है. इन्फ्लेटेड एनिमल के जो carcasses थे और ह्यूमन के कॉप्सेस थे, फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. वो तैर रहे थे हर जगह, जहां आंख घुमाई जा रही थी वहां पे वो तैर रहे थे. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इज ऑल अराउंड मतलब हर जगह. इवन ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन. हर जगह मतलब हर तरफ जो ये बड़े बड़े जो ट्रीज थे वो भी गिर चुके थे. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. Please remember the detail. कि क्या देखो, ये वाली चीज is very important. Why? Because it also served as a food for them, like that kept them going. All right. So you need to remember this, that how many coconut trees had fallen? Two coconut trees had fallen on the roof of their house. All right. This was a blessing in disguise. What do you mean by the term blessing in, I mean the phrase blessing in disguise? Blessing in disguise basically means when we are talking about any kind of a good thing that happened, all right, out of an unexpected thing. So that's something that was like hidden. ठीक है, और वो आपको अब पता चला कि ये तो मेरे लिए ही एक अच्छी चीज थी. ओके, इज दैट क्लियर? सो बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स, टेंडर क्या होते हैं? सॉफ्ट कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड. यानी सेवरल डेज दैट फॉलोड का मतलब है कि वो 2 दिन ऊपर जो रहे थे वो लोग, ठीक है. मतलब जब वो उस रात को वहां पे ऊपर रहने आए थे उसके बाद वो 1-2 दिन वहां पे रुके हैं, तो मतलब इमीडिएटली सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई थी. सो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो सॉफ्ट कोकोनट्स थे वो उन्होंने खाया. ट्रैप्ड फैमिली यानी कि फ्रेंड्स की फैमिली और प्रशांत. ऑल राइट, सो उनको मरने से बचाया इस चीज ने. फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन के लिए, for the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Huddled मतलब एकदम से एक ही जगह पे फिक्स होके प्रशांत और प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली वहीं पर उसी रूफटॉप पर 2 दिन के लिए रहे. They froze in the cold. उनको ठंड लग गई बहुत ज्यादा. And in a regular manner without any interval. So of course it's gonna make you freeze. Okay, and that is what was happening with him. All right, I hope that's clear to everybody. Could you please give me a thumbs up, guys, in the comment section? Whosoever is listening to me right now, could you please give me a thumbs up in the comment section?
ओके बबी, हाय डियर प्रशांत साउथ। और ना ना बेटा, यूजर प्रशांत अपने फ्रेंड के घर आया था, ठीक है, गांव में आया था वो। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताई है बात कि वो वहां कहाँ पे उसके अपने फ्रेंड के घर आया, तो उसके गांव आया था। तो प्रशांत के घर पे नहीं, प्रशांत के फ्रेंड के घर पे कोकोनट ट्रीज गिरे थे। ऑल राइट, इज दैट क्लियर यूजर? हम्म, इज दैट क्लियर? ओके, यानी कि प्रशांत के फ्रेंड के घर के ऊपर गिरा था, नॉट ऑन प्रशांत हाउस, क्योंकि प्रशांत अपने फ्रेंड से मिलने गया था, और जिस दिन मिलने गया था उस दिन ये चीज हुई थी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी लैग नाउ, आई थिंक दैट आई एम प्रीटी विजिबल एंड यू गाइस कैन सी, आई मींस hear me well as well, if I'm not wrong, right? Okay, okay, user, no problem. Okay, so now what happened is that he was in tears. That means that he was really sad. The only thought, सिर्फ एक सोच that flashed through his mind, जो उसके दिमाग में चल रही थी, was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Fury is like the anger. उसके दिमाग में ये चल रहा था कि क्या उसकी खुद की फैमिली सरवाइव कर पाई होगी, मतलब क्या उसकी खुद की फैमिली होगी अभी, क्या उन्होंने फेस कर पाए होंगे वो इस सुपर साइक्लोन का एंगर। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन? बिरीव्ड मतलब टू बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, दैट मीन्स कि किसी चीज से मतलब वंचित रह जाना। तो उसको ये था कि एक बार तो मैं ही लॉस्ट हिज मदर, हमारी स्टार्टिंग में आपको पता चलता है ना कि 7 साल बाद, उसकी मम्मा की डेथ के 7 साल बाद, ऑलराइट, ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो एंड मीट हिज फ्रेंड। तो अभी उसको ये लग रहा था कि क्या एक बार फिर से मेरा कोई मतलब जानने वाला या मेरी कोई फैमिली वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा। 2 days लेटर, यानी कि अब 2 दिन बाद, 2 दिन तक वो लोग ऊपर छत पर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन बाद विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को ऐसा लगा कि 2 साल का टाइम उसने स्पेंड किया है। द रेन सीज्ड। सीजिंग का क्या मतलब होता है? एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सीज? द ट्रेन सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है कि 2 दिन बाद जो ट्रेन है, सॉरी, रेन है, नॉट ट्रेन, रेन है, वो रुक गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। रिसीड इज टू गेट बैक, ठीक है, टू सेटल। ऑलराइट, स्टॉप, राइट, हाय प्रियांशी। सो प्रशांत वाज डिटरमिन्ड। प्रशांत ने ना बहुत ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर लिया था, यहीं से आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी ही वाज, बिकॉज व्हेन वी आर गोना डील विद द कैरेक्टर स्केच ऑफ द कैरेक्टर, नो, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो प्रशांत वाज डिटरमिन्ड, मतलब प्रशांत बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था टू सीक आउट हिज फैमिली। टू सीक आउट हिज फैमिली मतलब कि वो जाके अपनी फैमिली को देखेगा विदाउट फर्दर डिले, बिना अब आगे और लेट किए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो सिचुएशन ना अभी भी डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली प्लीडेड, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट किया विद प्रशांत, ही प्लीडेड विद प्रशांत, उसको रिक्वेस्ट किया टू स्टे बैक, मतलब आप रुको, और इट अ लिटिल वाइल लॉन्गर, अ लिटिल वाइल लॉन्गर, मतलब थोड़ा टाइम और रुको। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसको जाना ही था। ओके, डू यू ऑल गेट दैट एवरीबडी? No worries, Priyanshi. Do you all get that, guys? Anything that wasn't making sense, could you please ask me? Yes, everyone. Okay, cool. So he equipped himself. Equipment himself, matlab, he got several or some things with himself. All right, himself with a long, मतलब एक बड़ी sturdy stick या something like which is a strong enough, and then started on his 18-kilometer expedition. How far was his village from his friend's village? 18 kilometers. Okay, remember this. So उसने वहां से start करी 18 किलोमीटर की जर्नी। एक्सपीडिशन रेफर्स टू योर जर्नी बैक टू हिज विलेज थ्रू हिज स्वॉलन फ्लड वाटर्स। स्वॉलन फ्लड वाटर्स मतलब विद अ लॉट ऑफ वाटर्स एवरीवेयर। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। वो एक ऐसी जर्नी थी वो कभी नहीं भूल सकता है। ही कॉन्स्टेंटली, मतलब उसको मतलब बिल्कुल एकदम
कंटिन्यूस मैनर में, रेगुलर मैनर में उसको यूज करनी पड़ी थी अपनी वो डंडी जो वो लेके जा रहा था, टू लोकेट द रोड, रोड को ढूंढने के लिए, ठीक है, टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शेलो, ये देखने के लिए कि कहाँ पे सिर्फ पानी ही है। शेलो इज लाइक कि वहां पे और कोई जैसे डेड बॉडीज थी, ट्रीज फ्लो कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, और जो डिवास्टेटेड हाउसेस थे वो भी, उनके भी पार्ट्स फ्लोट कर रहे थे। सो ही हैड टू लुक फॉर द प्लेस जहाँ पे सिर्फ पानी था। ओके, एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, कहीं कहीं पे था कमर तक पानी था बस। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और वहां से निकलना फिर धीरे धीरे, मतलब वहां से निकलना बहुत धीरे हो रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, कहीं कहीं जगह पे ही लॉस्ट द रोड, कहीं पे मतलब रोड नहीं, स्टिक जो है वो रोड नहीं फॉलो कर पा रही थी। एंड ही हैड टू स्विम, फिर वहां पे उसको तैरना पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ मतलब दूरी पर, ही वॉज रिलीव्ड, मतलब उसको थोड़ा चैन मिला, ऑल राइट, टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, कैसे, क्योंकि उसको दो दोस्त मिले उसके अंकल के, ऑल राइट, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। तो यानी कि इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड्स, इट वॉज द फ्रेंड्स, सॉरी, दे वर द फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, ठीक है, जो कि वापस विलेज आ रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, सो उन तीनों ने डिसाइड किया कि अब वो सब लोग साथ, एक साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस। यूजर देखो, एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, इसका मतलब होता है एट सेवरल पॉइंट्स, मतलब जैसे कि वो चल रहा था, तैर रहा था, पहले तैर रहा था, ठीक है, और सॉरी, नहीं, पहले तैर नहीं रहा था, मतलब वेस्ट डीप पानी था ना, कमर तक पानी था, तो उसको चलने में दिक्कत हो रही थी, ऑल राइट, और जो चलना हो रहा था वो भी कम था। ओके, सो नाउ अब क्या हुआ कि कुछ पॉइंट्स पे ना उसने, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स पे उसको रोड नहीं मिल रहा था, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तो वहां पे पानी इतना था कि वो तैर रहा था, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके एवरीवन, ओके, चलिए आगे चलते हैं अब हम। So, as they waded through the waters, waded through the water basically means that as they like swam through the waters, or as they cut through the waters. All right, is that clear? As they cut through the waters, matlab waded through the water is like as they cut through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre is like death related, ठीक है। सो दिस इज लाइक कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, पानी को पार करके आगे बढ़ रहे थे, जो वहां पे जो सीन थे जो वो देख रहे थे वो और भी ज्यादा मतलब भयानक हो रहे थे। ओके, दे हैव टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मतलब वो डेथ रिलेटेड सीन्स थे, मतलब उनको बहुत, मतलब जो डेड बॉडीज थी वो फ्लोट कर रही थी, तो उनको उनको धक्का मारना पड़ रहा था। और डेड बॉडीज किस किस की थी? औरतों की थी, आदमियों की थी, बच्चों की थी। एंड करकैसेस, करकैसेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया। डेड बॉडीज किसकी थी? डॉग्स की थी, गोट्स की थी, और कैटल की थी। तो यू हैव टू रिमेंबर, डेड बॉडीज में मेन, विमेन, चिल्ड्रन, एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स में डॉग्स, गोट्स और कैटल, ठीक है, दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। ऑल राइट, सो बेसिकली उनको ये सारी बॉडीज हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास, हर गांव में जहां से वो निकल रहे थे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। बेयरली का क्या मतलब होता है? हार्डली, ठीक है, उनको शायद ही कोई घर खड़ा दिखता था। ओके, प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, इट्स एन एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
ठीक है। सो उसने क्या बोला कि प्रशांत बहुत तेज रो रहा था आप, ऑल राइट, बिकॉज उसको अब अपनी फैमिली की बहुत चिंता हो रही थी। उसको कोई घर नहीं दिख रहा था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था। All right, he was sure, वो sure था that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe is तूफान, devastation, this calamity. All right, catastrophe basically refers to the calamity. तो उसको ये श्योर था कि जो मेरी फैमिली भी है ना, वो भी पक्का से ये सर्वाइव नहीं, that the current swept against them and they moved away. That is like that they were getting so very much goosebumps. It was like this. It was not a scene for them to like bear. They couldn't see it. And they were just moving ahead by just siding them. Even if touching them and siding them, it was giving them some sort of like a goosebump kind of thing, which was so very much difficult for them to bear. And it was creating some chills in their body. You know, when you see something which is horrifying, you feel so bad about it. If you hear of some accident which was so terrible, you get so shivers. So that was the situation with them. They just couldn't bear seeing all that. Okay. Now what happened next is eventually, so मतलब अभी ये सब पार करते 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 प्रशांत reached his village. Very important. प्रशांत अपने गांव पहुंच गया. प्रशांत के गांव का नाम क्या था? ये बहुत जरूरी चीज है. ठीक है, प्रशांत के गांव का नाम क्या था? प्रशांत के गांव का नाम था कलीकूड़ा. प्लीज रिमेंबर दिस, मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख रही हूँ. इट्स KALIKUDA. इसको ध्यान से लर्न करो. अगर आप इसकी स्पेलिंग अपने एग्जाम में गलत लिखते हो बेटा, आपके मार्क्स काटे जाएंगे. टीचर ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी या फिर आपको एप्ट मार्क्स दे देगी. नो, आपके मार्क्स काटे जाएंगे. ठीक है. तो हिज बेसिकली या हिज हार्ट वेंट कोल्ड, मतलब जो उसका जो दिल था एकदम ठंडा पड़ गया. दिल ठंडा पड़ जाना मतलब जैसे डर लग जाना, सांस रुक जाना, मतलब घबराहट हो जाना बहुत ज्यादा. ठीक है. वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहां पे उनका घर एक बार खड़ा हुआ करता था. देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. रेमनेंट्स मतलब डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टेड पार्टिकल्स, यानी कि टूटे फूटे कचरा. घर का जो टूटा फूटा कचरा होता है सिर्फ वो वहां पड़ा था. ऑल राइट, तो वहां पे सिर्फ कुछ हिस्से रह गए थे उनकी छत के. ऑल राइट, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मतलब उनके जो कुछ कुछ चीजें थी उनके घर में वो उस तूफान मतलब वो वहां पे पड़ी हुई थी. मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड, मतलब वहां पे मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड मतलब कि वो ऐसे लटकी पड़ी थी वहां पे ट्रीज के ब्रांचेस में. ऑल राइट, जो कि डार्क वाटर, जो वो गंदा पानी था उसके ऊपर ऐसे लटकी हुई वो चीजें दिखाई दे रही थी ट्रीज पे. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस shelter. All right, Kalikura is somewhere in Odisha. This is what I believe. I'm not really sure, but yeah, somewhere in Odisha. Yep, Odisha. Okay. All right. So we see अब यंग प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा. ठीक है, अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए. अमंग द फर्स्ट पीपल, जो सबसे पहला उसके पापा सबसे पहला जो लोग थे जो उसको वहां भीड़ में दिखे, वॉज हिज मेटर्नल ग्रैंड मदर. इट कुड बी दादी और नानी. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि जो सबसे पहले उसको दिखा था वो थी मेटर्नल ग्रैंड मदर, नॉट दादी, नानी. ओके, मेटर्नल ग्रैंड मदर रेफर्स टू योर नानी. वीक विद हंगर, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल कमजोर पड़ जाना भूख की वजह से. शी रश्ड टू हिम, ठीक है, वो एकदम मतलब कमजोर थी भूख की वजह से, वो एकदम से उसके पास भाग के गई. हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, ओके, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड मतलब ऐसे पूरे बाहें फैलाना किसी को हक करने के लिए. हर आईज ब्रिमिंग मतलब उनकी आंखों में पानी भर गया था. इट वॉज अ मिरेकल. ओके, इट वॉज मतलब वो उनके लिए एक जादू था. और मिरेकल इज अ जादू. ओके, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. मतलब क्यों उनके लिए जादू था, वो उनकी आंखें भर गई थी क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि वो मर गया है. ऑल राइट, क्विकली वर्ड स्प्रेड, ठीक है, जल्दी से मतलब सब लोगों के आपस में ये बात फैली कि प्रशांत आया है. और जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली रेफर्स टू योर चाचा, ताऊ जी, योर कजन्स एंड ऑल. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो नाउ वी सी अक्षांश बेटा, पहले तो यू शुड बी राइटिंग THERE. ओके, वी डू नॉट राइट THEIR.
for anything apart from people when we are talking about the belongingness. And the second is no, there is no mentee. You can easily see it from the very thumbnail of this very particular session. Ment is going to take place some other day. All right, once it's gonna be scheduled, you'll get an idea for that. Okay. सो अब क्या था, वीक विद हंगर उनको बहुत ज़्यादा सॉरी यप सो लोगों में ये बातें फैल गई, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली थी वो भी उसके आसपास आ गई, सब उसको गले लगाने लग गए, बहुत ही ज़्यादा उनको इस बात का चैन पड़ा, रिलीफ मिला कि ये जिंदा है. प्रशांत एंशियसली स्कैन द मोटले. मोटले रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट कलर्स और रेसेस, कि कौन कौन लोग हैं वहां पे. सिर्फ उसकी फैमिली नहीं थी, और भी लोग थे, ठीक है. सो उसने फटाफट से, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसने जल्दी से सारे लोगों को देखा. स्कैनिंग बेसिकली रेफर्स टू द फैक्ट हैविंग अ क्विक ग्लांस. फटाफट से अपनी नजरें घुमा के देखा. बैटर्ड ग्रुप. बैटर्ड मतलब कि सब लोग टूटा फूटा ग्रुप. किसी का कोई वाइफ है, किसी की मदर है, किसी के फादर है, किसी के हस्बैंड है, समथिंग विच हैज बीन शैटर्ड. नाउ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, जो उसके भाई और उसकी बहन थी, उसके जो अंकल थे, उसके जो आंट थे, they all seem to be there. तो उसकी ज्यादातर फैमिली that was there. Okay, is that clear? Now, what do we see, everybody? Now, whosoever was there, Hussein, that has been given in the very chapter. Apart from that, we are not going to assume, neither we are being told. Okay, by the next morning, so ugly morning तक, as he took in the desperate situation in the shelter, जैसे ही उसने वहां पे देखा कि सब लोग वहां shelter में हैं, he decided to get a grip over himself. Now this is one of the very important things, like which usually comes in your examination as well. Like what does it mean? He decided to get a grip over himself. इसका क्या मतलब है? What do you understand by this? That he decided to get a grip over himself. इसका basic मतलब ये है that he decided to amend the things. He decided to be the leader to fix the things. He decided to find the solutions of the problems they were facing related to food, related to proper shelter and everything. So he wanted people to be a little more fine and not really sad or like deeply grief stricken. So he wanted to find a solution for that, and he wanted to work for that, and that is why he decided that in order to infuse the confidence, or in order to infuse a little positivity in all these people, he himself would have to work at it first. He himself would have to be like a bit more enthusiastic to help out the people. Cool. So he sensed a deathly grief settling upon the 25 strong crowd in the shelter. Crowd मतलब shelter में कितने लोग थे? 2500 लोग थे. Remember this. कितने लोग थे? 2500 लोग थे. ओके तो उसने ये सेंस कर लिया था कि एक बिल्कुल डेथली, जैसे मरी हुई सी, दुख वाली, मतलब एक ऐसा सा ऑरा, एक ऐसा सा एटमॉस्फेयर इन 2500 लोगों में ना सेटल हो रहा है. ठीक है. 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज. कितनी लाइव्स विलेज में लॉस्ट हुई थी? 86 लाइव्स. तो 86 लोग मर गए थे. ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे. सो उस विलेज में 96 हाउसेस थे जो सारे के सारे टूट गए थे. इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर. तो वो चौथा दिन था शेल्टर पे. यानी कि आपको ये समझ आ रहा है दैट द डिवेस्टेशन had resulted in the worst situation for these people. Okay. Yes, strong crowd basically refers to a good number of people, because the number of deaths taken place in this village was way more lesser, okay, as compared to the other villages. It was just 86 people who died and 2500 people were still there. That is why the number has been referred to as a strong one, and strong crowd refers to that the large number of people were there, not lesser number of people. Okay. Yeah. Now we see, yep. So it was their fourth day at the shelter. So please remember the name of the shelter. That is also important. So far they had survived on green coconuts. अभी तक वो किस पे जिंदा थे? हरे coconuts पे. But there were too few to go around such a tumult of people. Tumult of people means like a large gathering or a large number of people. Okay, remember that. प्रशांत all of 19 years. प्रशांत कितने साल का था? 19 साल का बच्चा था वो.
ठीक है, please remember this. That is what we're gonna talk about because he is the face of this very particular chapter, who tells us about the amount of dedication and determination is needed in order to face any of the difficult situations in our lives. Like whatever difficulties or obstacles you see in your life, you need to just get over it, and that has to be done in a correct manner. Okay, weathering the storm is like surviving the storm. Surviving the storm. Okay. Now, here we go. Prashant, he was 19 years old, decided to step in as the leader of the village. उसने ये decide किया कि वो ना leader की तरह step करेगा. Okay. If no one else did, अगर कोई और नहीं करता है तो वो करेगा. He organized. उसने क्या किया? This is a very important paragraph wherein we see that he was a very little, I mean that he was not very advanced in his age. He was not a very mature man, or I would say that he was just a boy, but the way he decided to take care of the people, to organize the things, it was really commendable because all this shows that he was a true leader. He was really concerned about his people. He was a kind hearted person. He was a very helping person. Whenever we are going to write about the characteristic of this person, we need to use a lot of adjectives. I've always been saying this. Whenever you have to talk about the traits of any person, just make sure that you're using as many adjectives as possible. That's like really good. Okay, so we see उसने organize किया a group of youths. ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज किया एक यूथ का ग्रुप और एल्डर्स का टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट. मर्चेंट इज बेसिकली अ पर्सन, ओके, like a businessman, all right, who has a shop or who has an office related to something, to just provide the things. सो उसने जॉइंटली प्रेशराइज किया मर्चेंट को वंस अगेन टू स्टार्ट विद हिज राइस. उसने प्रेशराइज किया कि फिर से वो स्टार्ट करे, क्या क्या करे, वो हमें चावल दे. दिस टाइम द डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब ये जो कमेटी बनी थी, डेलीगेशन रेफर्स टू द कमेटी, जो ये कमेटी बनी थी, मतलब कमेटी रेफर्स टू लाइक अ ग्रुप formed by a number of people. ओके, सो ये जो ग्रुप बना था ना वो बिल्कुल सक्सीड हुआ, वो चावल लेने में जीते. एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मतलब विक्टोरियसली, जीत उनको हासिल हुई. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. वेडिंग इज लाइक क्रॉसिंग, मतलब पूरा उस पानी को क्रॉस करके तैर के आए वो लोग, ठीक है, शेल्टर पे. नो वन केयर दैट द राइस वाज ऑलरेडी रॉटिंग. किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो जो चावल थे वो ऑलरेडी सड़ रहे थे. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड. ठीक है, जो भी पेड़ गिरे हुए थे उनकी ब्रांचेस इकट्ठी की गई. ऑल राइट, एंड वर गैदर टू लाइट. लाइट मतलब जलाने के लिए एक रिलक्टेंट और स्लो फायर, क्योंकि वो ऑलरेडी गीली थी ब्रांचेस बारिश की वजह से, ठीक है, और ऑलरेडी पानी में गिरी हुई थी, तो इसलिए जो फायर थी वो बहुत धीरे और मध्यम जल रही थी. रिलक्टेंट क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट रेडी टू बी फायर्ड because of being wet, because of the rain, but still they tried hard and they lighted a light which was a little light. Okay, now we see what happened is ऑन विच टू कुक द राइस. उस पर उनको चावल बनाने थे. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, पहली बार इन 4 दिन में जितने भी सर्वाइवर्स थे उस साइक्लोन शेल्टर पे, वो अपनी क्या कहते हैं पेट भर खाना खा सके. उसका नेक्स्ट टास्क ये था कि अब वो ऑर्गेनाइज करता एक टीम. किसकी टीम? अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैसेस. यानी कि आप उन्होंने एक यूथ वॉलंटियर्स की टीम बनाई, ग्रुप बनाया, ठीक है, क्या करने के लिए? जो वहां पे रेड क्रॉस शेल्टर में जो भी गंदगी थी, फिल्थ, ठीक है, यूरिन था, या फिर जो भी उल्टियां थी, या फिर अगर जो भी डेड बॉडीज एनिमल्स की जो फ्लोट कर रही थी, ठीक है, और जो क्या कहते हैं, और जो भी लोग घायल थे उनको मरहम पट्टी करने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए, और वो क्या कहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए. तो ये एक ऐसा ग्रुप बनाया. तो अब 5th डे पे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स. तो जो 5वें दिन पे एक हेलीकॉप्टर ऊपर से फ्लाई कर रहा था, ठीक है, और वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था. उन्होंने कुछ खाना और फूड पार्सल्स वहां पे ड्रॉप कर दिए थे. इट देन डिड नॉट रिटर्न. फिर वो उसके बाद नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स, ठीक है, जो यूथ का जो टास्क था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एम्प्टी,
ठीक है, यूटेंसिल्स ले लिए शेल्टर से, ठीक है, उन्होंने जो खाली बर्तन थे वो शेल्टर से ले लिए। देन दे डेप्यूटेड, डेप्यूटेड मतलब तैनात करना, फिर उन्होंने बच्चों को तैनात कर दिया कि वो ना सैंड पे, रेत पर लेट जाएं, जो कि पानी के साथ जो रेत है उस पे लेट जाएं, शेल्टर के पास ही जो है, और वो ये जो खाली बर्तन है वो अपने स्टमक्स पे रख लें, अपने बेली पे रख ले, जिससे कि कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से जाएगा मिलिट्री का, they can see, okay, the people who are lying in such a situation. All right, नहीं नहीं नो, इससे पहले का रेफरेंस बेटा ये है कि मर्चेंट्स दे डू नॉट पार्ट विद देयर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। ओके, मतलब ऐसे होते हैं खून चूसने वाले, लाइक दैट द नॉर्मल ग्रोसर्स, okay, like the very local grocers especially, so they do not part with rice or anything like that. ओके, सो दिस टाइम इसलिए बोला गया क्योंकि इस बार सिचुएशन ही खराब थी, ऑल्सो ही हैड टू गिव द राइस फॉर फ्री, नॉट फॉर मनी। ओके, इज दैट क्लियर? एनी डाउट एनीबडी? सो देन दे डेप्यूटेड, फिर उन्होंने बच्चों को तैनात कर दिया जिससे कि उनको ये मैसेज पहुंच सके। द मैसेज गॉट थ्रू, गॉट थ्रू का मतलब ये होता है कि मैसेज उन तक पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, फिर हेलीकॉप्टर जो था वो रेगुलरली आता था, ठीक है, शेल्टर के पास, एयर ड्रॉपिंग फूड, यानी कि ऊपर हवा से ही खाना नीचे देना, और जो और भी बेसिक नीड्स थी। प्रशांत फाउंड, ठीक है, फिर प्रशांत ने क्या देखा, दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन, मतलब बहुत सारे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए थे। ऑल राइट, ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो उन सबको साथ लेके आया, एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर for them. It's a very important thing. You see, write it here like this, something like this. Okay, so एक ना पॉलिथीन की शीट शेल्टर उसने उनके ऊपर लगाई। Women were mobilized to look after them. Women were mobilized मतलब कि उनको ड्यूटी दे दी गई कि आप इन बच्चों का ध्यान रखो। While the men secured food and materials for the shelter. जब जो मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट जो आदमी लोग थे वो लोग वहां जाके क्या कर रहे थे, वो उनके लिए खाना सही सा लेके आ रहे थे, और जो और भी चीजें जरूरत होती हैं शेल्टर की वो लेके आ रहे थे। नाउ what do we see as the weeks passed, ठीक है, प्रशांत was, जैसे जैसे मतलब हफ्ते निकल रहे थे, प्रशांत was quick to recognize, यानी कि प्रशांत को ये समझ आ रहा था कि जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं, they were sinking deeper and deeper in their grief, मतलब वो बिल्कुल डूब रहे हैं। डीपर और डीपर दो बार क्यों यूज किया है? Anybody, could you tell me why deeper has been used twice? What is the reference, like what is the use of using this word twice? Why has this been used like this? Tell me everyone, why has this been used like this? Tell me everybody. Yes, who is going to tell me, guys? Ha, extremely deep. Very good, Tanisha. But deeper and deeper refers to the fact that they were deeply getting, like, extremely deep. They were into their grief. Like, they were not able to concentrate on their surroundings and the things. He persuaded the women. Persuaded मतलब उनको, मतलब ये influence करना, उनको force करना. Not exactly force, but influence करना in a good way. To start working in the food for work program. कि वो स्टार्ट करें काम करना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, जो एक एनजीओ ने स्टार्ट किया। प्लीज नोट एवरीबडी, वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल एन बिफोर एनजीओ बिकॉज देयर इज ए साउंड व्हेन आई से एनजीओ, and you always use the articles on the basis of the sound of sorry, on the basis, yeah, on the basis of the sounds of the alphabets. Extremely deep, of course it is to emphasize, Shivesh, but to emphasize the fact that like they were deeply drowned into these things. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने ऑर्गेनाइज किया स्पोर्ट्स इवेंट्स। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, मतलब उसको, मतलब यू सी द काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज लाइक वेरी गुड, काइंड हार्टेड, आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो, गुड, ठीक है, काइंड हार्टेड, और क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम? हेल्पफुल, लीडरशिप क्वालिटीज, determined, okay, dedicated,
emotional and practical, right? Filled with empathy and sympathy too. ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं हमें जब हम इसकी बात करेंगे. All right, like this is an absolute amazing thing, everybody. Please make sure that you're always making use of a lot of adjectives because that really helps us to be like so flawless in our language. Also, like it gives an impression to your teacher that you know it and you can express it in a correct manner. Because in your examination, ultimately, your presentation in terms of your sentence writing is checked. That's what the art of language is. Okay. All right. Okay, Tanisha. All righty. Generous. Right, right. And brave enough. Absolutely correct. So he was like doing everything that was really needed for the welfare of the people that belonged to him. And he was really like wholeheartedly working towards it. It was not that he wanted some sort of fame or he wanted some sort of praise. No. All right. He was doing everything via his heart. Okay. So we see that he himself loved to play cricket and so he organized the cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. That means he wanted them to be engaged into something so that they are distracted and they are not really thinking of their past. Instead, they are just in their present and they are thinking of their upcoming future. Okay, so we see what did he do? So now he saw that the initial government plan, initial is the very first one. ठीक है, जो पहला गवर्नमेंट प्लान था इट वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स. सो जो गवर्नमेंट का पहला प्लान था वो क्या था कि हमें जितने भी अनाथ बच्चे हैं ना उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन सा बना देते हैं, समथिंग लाइक अनाथालय. ऑल राइट, और विडोज के लिए भी, ठीक है, हु ऑल हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स. हाउएवर, लेकिन दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड. लेकिन ये वाला स्टेप बिल्कुल एकदम सक्सेस के साथ मना कर दिया गया था एज इट वाज फेल्ड, क्योंकि ऐसा फील किया गया था दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस की ऐसे इंस्टीट्यूशंस में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव. जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे बिना प्यार के. एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. और जो विडोज हैं वो सफर करेंगी स्टिग्मा से. दैट मीन्स द थॉट्स ऑफ द पास्ट कमिंग बैक टू देम और फिर अकेलापन भी होगा उनके पास. सो प्रशांत ग्रुप बिलीव, सो प्रशांत का जो ग्रुप था उन्होंने ये बिलीव किया कि जो ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं शुड बी रीसेटल, उनको वापस से सेटल करना चाहिए उनकी खुद की कम्युनिटी में. ऑल राइट, पॉसिबली कैसे, उनकी नई फॉस्टर फैमिली. फॉस्टर बेसिकली रेफर्स टू अ फैमिली इन विच द चाइल्ड इज नॉट बोर्न बट इज ओनली टेकन केयर ऑफ इट्स अपब्रिंगिंग. Okay, so made up of childless widows and children without adult care. All right, so वो कह रहे हैं कि जो widows हैं, that means who have lost their husbands, they would take care of these kids and that would be like out of love. ठीक है, but in those institutions that the government was suggesting, therein the children would not have love and that would not be helpful. Okay, सबको समझ में आया? Give me a thumbs up in the comment section so that I can make a move ahead. जल्दी से बता दो if you have understood this. Quickly people, quickly. I hope you guys have. Chali. Now the very last part of this very particular chapter. All right. It is 6 months after the devastation. अब 6 महीने हो गए उस destruction को. All right. और सुपर साइक्लोन को. दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट ऑल राइट हैज हील्ड. मतलब जो उसका जो वुंडेड स्पिरिट था, मतलब जो प्रशांत इतना दुखी और इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, ग्रीफ स्ट्रिकन हो चुका था, वो ना थोड़ा सा ठीक हो गया बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग. ठीक है ना, बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसको खुद की दर्द की चिंता नहीं थी, उसको जो उसके आसपास लोग हैं उनके दर्द की ज्यादा चिंता थी. हिज हैंडसम यूथफुल फेस, ठीक है, जो उसका बहुत खूबसूरत एकदम जवानी वाला चेहरा है, इज वॉट, ये है जो वो जो विडोज हैं और जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं उस टाइम पीरियड में जब सबसे ज्यादा दुख का पीरियड था. ऑल राइट, तो वो हमेशा दे लुक फॉरवर्ड टू प्रशांत whenever they are in any grief. Am I clear on this, people? We are done with the chapter. The chapter has been written by Harsh Mando. Please make sure you're always remembering the name of the author, always in forever. Okay, it is really important. Also remember the name of the chapter the right way. We will be having the mentee of this chapter most probably the next week. Okay, all right.
Nahi user. No, he didn't lose anybody. All right. Okay. So guys, do you have any question related to the chapter? Is there anything you want to ask? Anything you want to ask? Chali. So you know everybody, Iconic and Plus subscription, we have personal guidance is given in Iconic, one-on-one guidance from the top exam experts, test analysis, one-on-one guidance from the top exam experts, study planner, customized study plan with bi-weekly review, study material, specialized notes and practice tests. Experts guidelines would be there, study booster workshop by exam experts. In Plus, you'll have the live classes, the weekly tests, the structured courses, and the unlimited access. So you all can go ahead with the code PSH10 and you can subscribe right away for your own betterment. So guys, you all can save big with the Unacademy extension offer. Now save up to 40% on Unacademy subscription. It's like really an amazing thing, everybody. You all can go ahead with it. In Plus, for example, you go ahead with 12 months plus 4 months. So the current price is 22,799. Total value is 34,298. What you pay is 20,519. And what you save is 13,779. So this is like 40% of your savings. Similarly, in Iconic, if you go with 12 months plus 4 months, the current price is 37,030 rupees. Total value is 53,529. What you pay is 33,327 and what you save is 20,202. So 38% of the savings. Offer is valid only from 9 to 11 of November and today is the last date of the same. Kindly make use of the code PSH10. Okay, don't waste your time. It's ending today and you can use the number 8585858585 for any query that you want to be resolved. Alrighty, people. Okay. User the pain in terms of the fact that there, like he himself had suffered a lot. Right, the way he saw the suffering throughout his way, like the pain he saw by his eyes. The pain is not something that happens only to you. If you see something around you, that is also very tough, you know, like he had to cross all the places by just sidelining all the carcasses or the corpses that he was coming through. Then he had to walk 18 kilometers to be there, and he was not thinking about the grief that he had also suffered because of the destruction. The houses were not there. It's just that he was now working for the widows, the children, and the people who were being left after that cyclone. Okay. I hope you got the answer. We have compete everybody, battle and know where you stand, play one-to-one live question battles and improve your rating live on the Unacademy Android app. Thank you everybody. I hope you all loved the class. We are gonna meet tomorrow. Tomorrow I've got a special class with all of you, right? A special in the sense, a special session on YouTube at 11 a.m. in the morning, wherein I am going to again revise the grammar with all of you. Be right there. Don't miss it. It's gonna be a long session. You all can come up with your doubts as well. So do not forget to subscribe the channel, hit the bell button if you're watching it for the first time, and definitely like the session and share it with your friends. I'm gonna catch up sooner, guys. Take care. Bye bye, and let's